सो आज हमें देखा एओलियल टोपोग्राफी और डेजर्ट टोपोग्राफी। और डेजर्ट टोपोग्राफी ना को मध्य कौन कह एओलियल टोपोग्राफी एओलियन टोपोग्राफी और डेजर्ट और यू में से एरिड टोपोग्राफी अदरवाइज भी कही परिबो एरिड टोपोग्राफी। वॉइस इज क्लियर टू ऑल जो ऑनलाइन रो छो। Yes, sir. तो खास करके जदि हमें देखिबा एरिड टोपोग्राफी इन इंडिया इट इज Sir, फाउंड ଟିକେ loudly କୁହନ୍ତୁ। एरिड टोपोग्राफी बेसी लाउडली तो मु कहि पारुनी कोन करिवि ना बाकी ऑनलाइन पिला को ठीक ठाक सुना होथबो ना। सो एरिड टोपोग्राफी इन इंडिया तुमको कोठी देखा जो हाँ सर ठीक साधारणतः ठाक। तुमको थार डेजर्ट रे तुमको देखा जिवो ना एरिड टोपोग्राफी इंडिया रे कोठी देखा जो थार डेजर्ट एंड समहाउ इन आल्सो लद्दाख also लद्दाख रे किछि परिमाण देखा जिवो। सो दिस इज द टू एरियाज जोठी कि हमको डेजर्ट टोपोग्राफी देखा जिवो बिकॉज़ लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट एंड दिस वन इज टू हियर हॉट डेजर्ट। तो ये हमर रहिबो ना डेजर्ट टोपोग्राफी रो प्रीलिम रे क्वेश्चन केमती आसीबो देख मेंस रो क्वेश्चन आसीबो कोन ना डेजर्ट रो फॉर्मेशन केमती हुए डेजर्ट रो सिग्निफिकेंस कोन दीज आर गोइंग टू बी द व्हाट हमें कहबा जाको कहबा मेंस क्वेश्चन। तो डेजर्ट कहीं के फॉर्मेशन हुए जस्ट फटाफट मु कहि दउची देन वी विल कम्स टू द लैंडफॉर्म। ना डेजर्ट कोन डेजर्ट एग्जैक्टली हमें कहबा जोठी लैंड दैट इज द रेनफॉल इज लेस देन हमें कहबा दैट इज व्हाट 20 सेंटीमीटर्स और साधारणतः हमें कहबा 5 to 20 सेंटीमीटर्स रेनफॉल दैट इज द डेजर्ट है ना। तो ये आपको हमें डेजर्ट बोली कहो जोटा कि लेस देन 5 कौन सी डेजर्ट होची जोटा कि लेस देन 5 सेंटीमीटर इवन द रेनफॉल इज लेस देन 5 सेंटीमीटर तो दैट वुड बी डेजर्ट। जोठी जेरोफाइटिक कौन देखा जो द नेचुरल वेजिटेशन इट वुड बी जेरोफाइटिक xerophytic natural vegetation देखा जिवो बा those plants that survive in harsh condition or the harsh temperature। तो अबे हमें देखिबा डेजर्ट काहे की फॉर्मेशन ही थाए तो लाइक इंडिया इज हैविंग डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न साइड on the western side we are having desert in Rajasthan in the Rajasthan we are having desert। Okay, so this portion of our desert is located is here, so this portion is our desert or that one is a hard desert। Okay, now why desert? So basically that means हमें देखिबा कि कंडीशन कोन डेजर्ट फॉर्मेशन पई कंडीशन कंडीशन 1 वेस्टर्न साइड रे साधारणतः देखा जाए वेस्टर्न साइड ऑफ व्हाट कॉन्टिनेंट वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट रे साधारणतः डेजर्ट देखा जाए ना। सेकेंड पॉइंट इज टू बी हाई प्रेशर व्हाट हाई प्रेशर कंडीशन हाई प्रेशर कले समस्त बुझी परिबो डन एवरीवन हाई प्रेशर है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इंटीरियर कंडीशन इंटीरियर कंडीशन लाइक कोस्टल एरिया रु जेते में भीतर को जुआ इंटीरियर कंडीशन or that would be what less marine effect less marine effect। so these are then what there would be less rainfall less precipitation or I would say less precipitation। then देखो cold current also another factor cold current cold oceanic current another factor cold oceanic current that is also another factor। so these are the certain factors जहाँ को हमें कहिबा डेजर्ट फॉर्मेशन रे हेल्प करे। then geological structure गोटे थाए so these are the factor that contributes for the formation of desert formation पे condition
हाई प्रेशर होता है वेस्टर्न साइड रे थाए इंटेरियर कंडीशन थाए लेस आम कह माराइन इफेक्ट देन लेस प्रेसिपिटेशन बाइट आम जब देखा रेनफॉल बहुत कम होता है एंड कोल्ड करंट रो इफेक्ट मध्य थाए सो दीज आर द कंडीशन दैट लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आम कह डेजर्ट रो हे परियो समझते कारण ये क्वेश्चन भी तुमको पचारि पारे ना तुम कह ये सब कंडीशन कौन ये जेते पॉइंट मु लिखी ये सबूर गोटे ऑब्जेक्टिव लेस रेनफॉल बिकॉज लेस रेनफॉल हेले ही डेजर्ट फॉर्मेशन होगा तुम कह केमिति जदि फॉर से as the Rajasthan is situated in the interior location, so being interiority, this one you will have less marine impact जेमती कि तुम Arabian Sea टू बहुत दूर अच्छी that is why जो moisture content in the air would be less as the less moisture would be there in the air that would be also lack of rain as well हाँ आउ गोटे तुम लिख lack less physical barrier आउ गोटे पॉइंट जदि तुम लिखिपर less physical barrier like the mountains एमती अभाव जदि थी like the Sahara desert does not have any mountains तो आमको जदि physical barrier थी then that will cause also rain like Himachal Pradesh Uttarakhand they are having lofty Himalayas and that is why contributing the more rain and this Thar desert does not have any physical barrier that is why the winds move parallel on the desert and that does not yield any rain so then less marine impact हमको जाना पड़ेगा इंटेरियर लोकेशन जेते बढ़ी बढ़ी जीवो सेते हमें कौन करो डिस्टेंस एज अ डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आल्सो डिक्रीजेस okay moisture also decreases hence the rainfall would be less the rainfall would be also less rainfall madhya kami kami jibo cold current kon thai because cold condition re tume jancho cold condition equal to high pressure and high pressure hele rainfall huye nahi for the rainfall we need low pressure and that is why high pressure is not a desirable condition okay but in desert case what that happens because of the high pressure desert also developed ତେଣୁ every desert is having high pressure done everyone ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ should I move ahead anyone move କରିବା ନା କଣ सर जो हाई प्रेशर जोन टा जो कोल्ड करेंट सेटा टिके कहि दे cold current देखो every like all the desert does not have cold current impact but certain desert is having but this one is not applied to third desert এটা খালি ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି ଯେମିତି କି ଆମର let's say କାଲାହାରୀ desert କଥା ନେଇ ଯାଅ जोटा कि आम आफ्रिकार अच्छी कि ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पाटागोनिया डेजर्ट कथा नहीं जाओ नहीं जाओ कि आटाकमा डेजर्ट नहीं जाओ कि कैलिफोर्निया दीज डेजर्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू द कोल्ड करंट बट आमर जो थर्ड डेजर्टा कोल्ड करंट जो फॉर्मेशन हो ना तेणु तुम जदि इफ यू आर राइटिंग ओनली थर्ड डेजर्ट देन कैंसल दिस पॉइंट बट जदि तुम मोस्ट ऑफ द डेजर्ट दुनिया लिखुच देन आड दिस पॉइंट होप ये बुझा पड़ yes sir now service revenue हाँ, that हाँ. means So now we will comes to the landform. That is the desert landform. Now first we will go through the erosion because of the erosional landform. Now we will go through the erosional landform. In desert, then who exactly the agent जोटा कि इरोजन करिबारे हेल्प करूची that is the sand. Na sand and wind. So they are the erosional agent. They are doing the agent and basically physical weathering is the dominant one.
the dominant one. So जदि तुमको पचार के डेजर्ट रो को प्रकार वेदरिंग अधिक हुए, डेजर्ट experiences more physical weathering rather than the any other form of weathering. So here agent, erosional agent की sand and wind, they are the erosional agent. For say कि जेतरा में लेट से तमे कोनसी जगह बाली बहुत अच्छी तमे ठिया हिचो बहुत स्ट्रांग विंड आसुची तो देखियो से बाली गुडा गोडरे फुटिला भलिया लागियो है ना लेट्स से समवन इज स्टैंडिंग हियर एन अ पर्सन the sand will like what आम कहबा जेंति छुंची फुटिला भलिया सैंड गुडा आसी गोडरे खाली गोडरे जदि ठिया हिथो हेटा फुटिला भलिया लागि थाए so that will create what आम कहबा so that means erosion कोन हबो it would be abrasion है ना देन तुमको डिफ्लेशन देखा जीवो there would be deflation, there would be saltation. So these are आम कहि परबा these are the basic आम कहबा form of weathering तुमको देखा जीवो abrasion means like the erosion हे जिबा friction द्वारा deflation अर्थात कोन लेट्स से बहुत जर सारा सैंड गोटे जगह पड़ी wind asila and the strong wind that will move the sand from here to another place here. Let's say this one is a point A. Here so many sand was there. Now what will happens? This sand would be deposited to the place B, and so this area would be a depressed area re convert hejibo. है so this kind of aku ko deflation. So this that means sands were deflected. The sands was deflected from here from A to B. A to B को deflect करिछि ये strong wind. Okay. Now comes to saltation. Saltation रो meaning होछि like rolling. Like what rolling? Anything which is moving other rolling एमती हेकी जाउछि सपोज गोटे जिंस कोन होछि रोल हे जाउछि ता द्वारा मध्ये से किछि फ्रिक्शन डेवलप करूछि एंड वेदरिंग मध्ये होछि आ गोटे थाय हमर कोन ना तमरो एट्रिजन अर्थात कोन एट्रिजन अर्थ बहुत गुडा पार्टिकल्स थिबो लेट्स से 2-4टा बोल्डर 10टा बोल्डर तांको भितरे कोलिजन हवा को कुआ जे एट्रिजन. So these are the form of weathering हमको देखिया जिवो एठी desert रे. Now comes to the landform. Fast erosional landform we will go through the mushroom rock. Mushroom rock. The fast landform erosional रे हमें देखिबा mushroom rock because the rock will looks like mushroom. The rock looks like mushroom. सेथिपे आपको कुआ जे mushroom rock. Is it fine to all? Now this is looking like the mushroom. So this one is mushroom rock. Done everyone? Okay. Now mushroom rock रो कोन हेई थाए तो जदि हमें देखिबा mushroom rock होटी गोट erosional. Earlier the rock structure was like this. It was like this. This was the rock. But due to the sand कारण जेहेतु sand टा टिके weight थाए and that would be weight so strong wind ताको बेसी uplift करि परिबो नाही तो sand कोन तळे तळे move करिवो तेनु करी जो तळ पार्ट टा थिबो that would be weathering erosion. This part would be more rather than this part. So rate of erosion would be here would be maximum as compared to the top position. So top would be intact or there would be less weathering erosion, but while the bottom portion that would be maximum subject to erosion. Hence the landform will develop in this structure. Clear to all? Everyone clear? Mukali strong wind is moving like this. Okay, ता सहित कोन थे डेजर्ट रे wind जेथर जाउची ता सहित कोन रहबो there would be sand also. Sand भी नै खिजिबो wind. So sand will act as the erosional agent. तो सेटा कोन हो जिवो ए जो तळ पोर्शन लेट्स से रॉक वाज लाइक दिस ठीक अछि तो ए जो बॉटम पार्ट दिस पार्ट वुड बी हाईली इरोडेड बिकॉज़ इट इज सैंड बारंबार जाय कि स्ट्राइक करिवो व्हाइल द टॉप पार्ट सैंड स्ट्राइक करि परिबो नाही बिकॉज़ सैंड तळे तळे मूव करे. डन नाउ hence the top part would be intact. तेणु करी से
कौन Yes, देखा sir. मशरूम फॉर्म रे डेवलप करिवो now comes to Inselberg next one Inselberg now Inselberg कौन Inselberg looks like this is a hard structure Inselberg काकु कुआजे ये होचे गोटे Inselberg now the surrounding region is plain this one is a plain this one is plain but this one is a monolithic rock एक मिनट ग्रीन टी सो प्लेन एरिया थी वो है ना एंड तो नियर बाय रीजन रे कौन थो प्लेन एरिया थी वो एंड देयर वुड बी स्टैंडिंग मोनोलिथिक रॉक अच्छा मोनोलिथिक रॉक के लिए बुझा पड़ियो तुमको मोनोलिथिक कहले द रॉक इज कंपोज्ड ऑफ ए सेम टाइप ऑफ इतरे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक नहीं जाहित वो सेम टाइप कंपोजिशन वुड बी सेम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ओके ताको कहचे मोनोलिथिक रॉक अब जो रॉक रो ना दिस वन इज ए मोनोलिथिक रॉक साइड रे प्लेन अछि आखा पाखरे किछि एमती स्ट्रक्चर नहीं दिस वन इज ए सिंगल स्ट्रक्चर तो यही भले रॉक को कहुचे इनसेलबर्ग है ना आरो आखपाख एरिया सहित किसी नवा दवा नहीं दिस वन इज ए स्टैंडिंग इंडिपेंडेंट रॉक फाइन टू ऑल हे जुओ एवरीवन सुनाओ जी समस्त को Yes, sir. नेक्स्ट लैंडफॉर्म हाँ सर, हाँ डेमोइसेल्स सर. नेक्स्ट लैंडफॉर्म इरोजनल डेमोइसेल्स ये केमती देखा जाए DEMOISELLES now how that one will look like that one will look like this the rock will look like this I mean it would be top flat the top would be flat it would be flat the top would be flat which would be supported by a pillar and this would be a flat the shape could be square and rectangle that does not matter the matter is that there would be a like pillar structure above which it would be like a flat top so these are the demoiselles so they are basically these pillars are resistant rock they're what resistant rock so that is why this one has not got eroded this one has not got eroded okay this one is about resistant rock ये होची गोटे resistant rock and this one but this portion let's say this one portion A and portion B the portion B is more resistant than the portion A and that is why this one is remained less erosion or less eroded as compared to the A part of the same structure ओके से सॉफ्ट थाए तो जदि तलटा सॉफ्ट थी अधिक इरोजन हो उपरटा जदि हार्ड थी कम इरोजन बिकज गोटे स्ट्रक्चर भी बोथ रमर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थाए देन 4 को आसीबा हमें जूजेन जूजेन ZEUGEN जूजेन सो जूजेन केमती देखा जाए दे वुड बी लाइक पॉट so they would be looking like this तो डेजर्ट रे कोन करा जिवो they would be looking like this तो एमिति गोटे एटा माउथ टा तार कोन रहबो it would be narrow but एमिति तुमको फॉर्म रे देखा जाए so these are the what जूजन
ए डेजर्ट रे देखा जाए दिज आर द व्हाट ये कौन आम कह डिप्रेस्ड एरिया दिज आर द डिप्रेस्ड एरिया जूजन तो साधारणतः कौन होता है लेट्स से गोटे पीएबल आ भीतर को पीएबलटा गला दिस पीएबल विल ग्राइंडिंग इफेक्ट करिवो ये कौन करिवो ग्राइंडिंग इफेक्ट थ्रू द ग्राइंडिंग इफेक्ट सो नंबर ऑफ पीएबल्स जीवो तो से एमती कौन करे ग्राइंडिंग इफेक्ट करी करी तलटा को बेसी चौड़ा कर दे ता माउथटा नैरो थाए सो दिस वुड बी जूजन आको में जूजन बोली कहि थाओ तो ये कौन थाए आम देखा अदरवाइज तुमको कौन कर नहले अल्टरनेटिव आम कह कौन फ्रीजिंग एंड वेट कंडीशन जहाँ आम कह तो जहाँ आम फ्रीज एंड थ्रो भी कहीपर लेट्स से फॉर एग्जांपल नाइट रे कौन करता है टेम्परेचर बहुत ही जल्दी घटी थाए आज द टेम्परेचर बहुत जल्दी घटी थाए ता द्वारा कौन अच्छा फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन तो जानी थो थॉइंग THAWING थॉइंग एक्शन फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन रो मीनिंग है कि जो लेट्स से एठी दिन बेले वाटर आसीगला इथरे राति रे दैट विल टर्न इनटू आइस रे कन्वर्ट हो हेन्स द वॉल्यूम जेतले बढ़ी तो ये धीरे धीरे यार मध्य इरोजन मध्य बढ़िबो तो एमती ग्रेजुअली अल्टरनेटिव आम कह आइस फॉर्मेशन हम एंड अगेन वाटर रे कन्वर्ट हम ता द्वारा कौन हो ये जो आम देखुचे जमती दिस शेप विल डेवलप दैट इज जूजन next we will comes yadam YARDANG yadams now how they looks like let's say this one is a rock sand is moving like this wind is moving like this so this would be what like undercut now this one is what it हम देखि परिबो ये केमथि छि deeply undercut as the sand is moving in the below so here would be more erosion here would be more erosion here would be less erosion है ना तो erosion टाइमर comparatively less and here would be more hence the top would be intact as a result this would be is looking like hanging ये केमथि hanging shape रो देखा जिवो and so these are called as the yada in desert everyone so these were erosional landform है ना तो ये थिला हमरो इरोजनल लैंडफॉर्म नाउ कम्स टू द डिपोजिशनल वन एबे हमें डिपोजिशन को आसीबा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ओके ना डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को आसीबा सो डिपोजिशन लैंडफॉर्म रे जदि हम देखिबो फर्स्ट वी विल कॉल द sand dunes then everyone these are what sand dunes अर्थात ड्यून अर्थात हीप ऑफ सैंड बा बाली रो गदा को हमें सैंड ड्यून्स कहि थाउ इज इट क्लियर लाउड एनफ टू ऑल yes sir yes sir सो yes sir सैंड ड्यून्स तो हमें देखिबा फास्ट होची तमरो सैंड ड्यून्स तो सैंड ड्यून्स रे कोन होता है सैंड आर डिपोजिटेड सैंड गुडा डिपोजिट है कि हीप हेते गदा हेते पूरा एमती तो ताकू कहा जाए सैंड ड्यून्स बट देयर शेप कुड बी डिफरेंट सेमन को जो शेप थाए डिफरेंट थाए सेतपे शेप अनुसार डिफरेंट सैंड ड्यून्स हेता है तो जदि हमें सैंड ड्यून्स को भाग करिबा तार पुनी गोटे भाग अछि जेमते कि स्टार सैंड ड्यून हे परे दैट कुड बी स्टार हे परे दैट कुड बी हॉर्न हे परे नॉर्मल हे परे सेव हे परे तो एमती डिफरेंट सैंड ड्यून्स अछि स्टार सैंड ड्यून हॉर्न और बर्शान भी हमें ताको कहि परिबा और वी वुड कॉल इज द बर्शान है ना
तमर डिफरेंट सैंड ड्यून्स रही लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स रही तो आम गोटे गोटे एबे पढ़िबा सैंड ड्यून्स ना सैंड ड्यून्स केमती फॉर्मेशन हुए कंडीशन कौन ना कंडीशन sand dune ro formation ro condition there should be sand fast sand strong wind and obstruction and what obstruction an सर obstruction सेकेंड पे कौन सा strong wind and obstruction that obstruction might come from a stone or natural vegetation. Okay, so these are the three conditions required for the formation of sand dunes. तो एक तो दरकार strong wind, sand तो already हमको दरकार and obstruction like गोटे stone है परे और natural vegetation that could be गोटे तमोर tree है परे grasses है परे. Okay, so these are the obstruction they must provide so that गोटे जगह sand, let's say the sands are moving like this, where they will deposit, where they will get a strike, where they will get a what obstruction. Let's say here is a plant achi, there is a plant, so these plant, okay, the plant will obstruct the sand, the plant will obstruct the sand and the sand will start depositing here and it will form what heap of the fan. Okay, sand ro gote heap formation karibo. So that is why, so we need this condition sand, wind and obstruction. Now we dunes केते प्रकार पढ़िबा. Okay, तो तादर कोन जे dunes formation होइथाय. तो कौन से गोटे obstruction बा obstruction मिलिले सेठी से डिपॉजिट कर दबो. ठीक अछि. एबे हम टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स देखिबा. तो फास्ट हमें देखिबा लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स है ना. अच्छा मु आगे तुमको इजीटा पढ़ैते बरसान. तो टाइप ऑफ सैंड ड्यून एबे हम देखिबा types of sand dunes. कंडीशन आम देखी ना टाइप्स रे देखियो आम बरसान. तो फास्ट आम देखियो बरसान ना. बरसान कौन इट्स ए टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स. इट वुड बी लुकिंग लाइक, it would be looking like this. So बरसान है ना. द क्रिसेंटिक शेप, ये शेप को हमें कौन कहूँ क्रिसेंटिक शेप. The crescentic shape, the sand dune, so that would be the what shape of the sand dunes. Now here in these sand dunes you can see the sand dunes. So the shape is, and it is having two horn, the horn 1 and horn 2. So these sand dunes is having, or the Borsan is having two horn. Eti kon achi two horns achi, and the wind direction is, wind is coming from here. Wind is coming from this direction, depositing here, and some sands are also what amikeba forming the tail or horn. आपको हमें horn कहिबा. So wind direction would be in this direction. Okay, this one is called as the Barsan. Done everyone? Next, parabolic sand dunes देखा जिवो. Parabolic sand dunes like this. The sand dunes would be like semicircular. Parabolic. Parabolic sand dunes जो मन की semicircular. Semicircular parabolic sand dunes. जो मनकर shape टा कौन थे semicircular थे. They would be what parabolic sand dunes. Then we will comes to the star sand dunes. अर्थात sand dunes would सेप be, अनुसार नेम चेंज हेची कि मानकर हाँ हाँ shape अनुसार ए सब सर डेजर्ट रे देखा जाए. सब डेजर्ट रे देखा जिवो. स्टार सैंड ड्यून तापर एसपो स्टार सैंड ड्यून अर्थात द सैंड ड्यून रो शेप टा स्टार भलिया है ना. तुम को एमिति केमिति हैला
let's say for example this one, wind direction was here and एमती भाव wind direction एमती हो तो पुणी एमती आउ गोटे फॉर्मेशन हो जाई पारे है ना wind direction एपट हो पुणी एमती आउ गोटे फॉर्मेशन हो जाई पारे तो एमती wind जदी चारि पटे बुलुची तो that will lead to the formation of the star shape. Done everyone? है जीवन yes sir parabolic star देखिले आमे देखिले कोन नेक्स्ट देखिले आमे जोटा बर्सान देखिले ना कम्स टू आमे देखिबा बे लॉन्गिट्यूडनल longitudinal sentence अर्थात sentence would be like this. And the wind is moving like this. So these are what desert हमें केबा topography है ना ये सब तमरो desert topography रे जीवो ना देखो sand is moving like this and the wind is moving like this and the sand is deflected into two direction into two तो deposit करी करी जाउची and the sand is moving like this obviously both side को से deflect करी के sand को deposit करोची and it would be deflected like this okay but the wind is moving straight and hence the sand bars of the sand dunes will form parallel तेणु आकु longitudinal बोली कहा जाए डन तो ये थिला तुमरो कोन दिस वे द हम कहबा desert topography. Now we will comes to the also आमे काली तमन को किछि कहि देथिले आउ किछि मु कहि देथिली जेमति कि arid topography arid topography रो भी किछि कहि देथिली फॉर एग्जांपल बैडलैंड टोपोग्राफी वगैरह कहिथिल त मन को जे मन थिबो है ना अच्छा किछि मु तुमको आउ वर्ड कहूची सुनो बॉल्सोन्स ये ओपीएससी पचारि छी शायद मते लागुची एंड प्लेयर्स BOLSONS and players PLAYAS ये कौन बॉल्सोन्स आर द व्हाट हम कहबा इंटरमॉन्टेन बेसिन इन एरिड रीजन रे दीज आर द बेसिन एमती बेसिन तो जानि छ समझते लेट्स से एपटे गोटे माउंटेन अछि एपटे गोटे माउंटेन अछि तो ये मझी एरिया को बॉल्सोन कहा जाए है ना दिस वन इज एरिड बेसिन ताकू कहा जाए बॉल्सोन है ना these are intermontane कहले दीपट साइड रे माउंटेन रहिबो मझी एरियाटा ड्राई बेसिन ताको हम कहबा बॉल्सोन okay both side will have mountain middle part is basin and that one is dry land. Done. Now players कोन now numerous एमती हमको कोन देखा जाए ephemeral streams मध्ये देखा जाए है ना ना बॉल्सोन जो रहिला तमरो ये जो बॉल्सोन रे लेट्स से रेनफॉल होची तो as the rains happens so because of the rain water will collect तेठी कोन होची water collection हे जीवो in the rainy season some sort of water will comes to that basin ये जो basin अछि हमरो ए basin रे किछि water आसी की कोन करिवो रहिबो and that time that would be called as the players that times it will called as the players that means a basin रे जेतलो water deposit हे जिवो so that time it will called as the players done everyone ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଏ ସାର୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ देखो इंडिया रे सब देखा जीवो सेमती किछि माने नहीं ना बुझि परछन के लेट्स से ये सब लैंडफॉर्म तुमको सहारा रे देखा जीवो सहारा इज ए ह्यूज डेजर्ट तुमको ईरान डेजर्ट अरब रे देखा जीवो तुमको
दैट ये सब आमर एमती ना कि राजस्थान रे भी नहीं, राजस्थान रे भी बहुत एरिया रे तुमको देखा जिवो, बट सेटा प्रैक्टिकली को डिस्ट्रिक्ट रो को जगह रे देखा जिवो सेमती तो कहि हेबनी ना, बुझि परछ कि सेमती कहि हेबनी कि एई डिस्ट्रिक्ट्स रो एई जगह रे देखा जाए, तो एटा पर्टिकुलर कहि हेबनी। बट तमे केबे जदि डेजर्ट बुलुछ देन तमे आइडेंटिफाई करि परबो कोठी कोठी बेसिन अछि, एंड दैट वन इज ड्राई ऑब्वियसली, वाटर तो जमा हबो रेनफॉल हेले अल्प किछि, एंड दैट टाइम दैट वुड बी कॉल्ड एज द प्लेयर्स। Then next we will comes to the Bajda. Next landform को आसीबा हमें BAJADA Bajda। तो ये Bajda कौन? These are the depositional plane between the हमें कहबा players। एबे देखो ध्यान से कौन सुनो, तो बॉल्सोन्स कौन एंड अच्छा तो बॉल्सोन्स कौन बुझी परिबो एबे ना बुझी परिबोनी। फॉर एग्जांपल ये गोटे माउंटेन, दिस वन इज माउंटेन, ओके ना, एंड भाव तुमको माउंटेन डेजर्ट केमती आसिला, दैट माइंड जेमती कि तुमरो लद्दाख, लद्दाख रे माउंटेन अछि कि नहीं, अछि ना, बट लद्दाख तो गोटे डेजर्ट ना, ना डेजर्ट नुह, हाँ कि नहीं, डेजर्ट। नाउ दिस वन ये ग्रेजुअली आसी आसी एटा गोटे डिप्रेस्ड वैली, दिस वन इज व्हाट डिप्रेस्ड वैली, एंड दिस वैली इज ए जो वैली रो ए पार्ट होची तमरो प्लेयर्स, दिस पार्ट जोठी वाटर जमा हबो दैट वुड बी प्लेयर्स, बट जो पार्ट रे वाटर जमा हो नहीं दिस वुड बी बाजदा, दिस वुड बी व्हाट बाजदा। कहले जेमती कि भाव गोटे पोखरी अछि है ना, तार स्लोपिंग हेछि, then that would be like this, okay, this sloping area जोठी water रहबो नहीं, water would be here accumulated, that area is called as the bajda। done है ना, so that means gentle sloping हमें कहबा, like this one is but here gentle sloping, this one is here is what sloping, so and this would be depressed, here would be depressed area, so this sloping area is called as the bajda। done है ना, this set sloping area is called as the bajda। पेज बनाइबे समझते सर आउ थोड़ी टिके कहि दियंतु लाइन टा सर। मु कहली जो हमारा बॉल्सोन्स थिला, बॉल्सोन्स आर व्हाट बेसिन, बॉल्सोन्स आर व्हाट बेसिन ना, बेसिन रे जदी वाटर कलेक्ट हैला ताकू कहबा हमें कहबा प्लेयर्स, ताकू हम कहबा प्लेयर्स। नाउ ए जो बेसिन हैला, ए बेसिन ता तो डायरेक्ट ही नथो ना, gradually it will come, then it will lead to form the basin। this sloping, this gradual sloping, this gradual sloping is called as bajda। ओके सर। done, this gradual sloping is called bajda। done, so ये थिला हमर पूरा लैंडफॉर्म, आमे दैट इज द व्हाट ग्लेशियल देखिचे, रिवर देखिचे, डेजर्ट देखिले, कोस्टल देखिचे, क्रास्ट देखिचे है ना, और लाइमस्टोन टोपोग्राफी, तो ऑल टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी वी हैव कवर्ड। और तमन को पीडीएफ में थे मु वर्ल्ड ज्योग्राफी रे शेयर कर देछि है ना। सर रिवर टा टिके कहि देबे, सेदिन कहउतले जे हमको साउंड आसु नथिला ना सर। तो ऑलमोस्ट तमरो हमें खत्म कर देछि लैंडफॉर्म गुडा। हाँ रिवर कथा कहउतलो ने, रिवर टा आउथर कहि देबी आज्ञा सर। ठीक, आगे टिके रिवर पैटर्न जानी जाओ है ना, ना ओपीएससी कौन पचारुची तो तुमको टिके आगे हाँ 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 ऑप्शनल ग्रुप रे भी शेयर कर देछि मु सेम प्रीलिम पई से जे मटेरियल टा है ना, सेटा प्रीलिम और मेंस रे काम दबो है ना, सेटा प्रीलिम और मेंस रे काम दबो तुमको, जो माने ऑनलाइन रे अछो भी से माने पाई थो ऐप रे भी अपडेट ही जाईछि है ना। हाँ सर पेज तो एबे हमें देखिबा ड्रेनेज सिस्टम। आगे ड्रेनेज सिस्टम देखिबा, सेथरे टाइप्स ऑफ देखिबा ड्रेनेज सिस्टम, जेमति तमरा डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, एगुडा में टिके एबे देखितबा। एटा कोन सर एटा ड्रेनेज पैटर्न पढ़ाला। हाँ ड्रेनेज
टाइप्स एंड पैटर्न, टाइप्स एंड पैटर्न है ना। तो एथरे हम कौन पढ़िबा, ड्रेनेज टाइप्स एंड पैटर्न बोथ पढ़िबा। तो आगे हमें मेजर ड्रेनेज सिस्टम आगे हमें जानिबा एक्जाक्टली कौन ही थाए कि पैटर्न हमें पढ़े पढ़िबा, आगे टाइप्स देखिबा। जेमती तुम माने जानछो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम, वन इज व्हाट हिमालयन सिस्टम and one is your what peninsular system, okay nahi, tamar both the system is there. So these rivers, the rivers flowing here, they are the peninsular rivers, the rivers are flowing, is not it? तो एमती तमरो थाए these are the peninsular river. तो हम एमन को हमें कोचे peninsular rivers, the rivers coming down from the Himalaya, these are the Himalayan rivers. तो हमारे साधारणतः two types हमको देखा जाए, Himalayans and peninsular. बट कौन ही थाए को ओपीएससी कौन पचारुची आजिकल टिके डिफिकल्ट पचारुची, जेमती तुमको पचारिबो कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम कौन है, तो किछि आगे स्ट्रीम्स रो ना जानि दियो। नाउ स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स अर्थात गोटे जेमती कि लाइक द वाटर इज फ्लोइंग इन ए डिफाइंड पाथ, ताको हम कोचे स्ट्रीम है ना। तो हम ताको कोचे स्ट्रीम। तो एमान को ओरिजिन बेस रे हमें ताको कौन कोजो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रे हमें इनको डिफरेंट टाइप रे पुट करूता है। फॉर एग्जांपल कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम, कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम ना, कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम कौन, तो ये भले डिफिकल्ट क्वेश्चन आजिकली पचारुची है ना। कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम कौन ना, प्रथम कथा केमिति हेई थाए कॉन्सेक्वेंट स्ट्रीम कहले सिंपल लैंग्वेज रे मु जदी कहबी, consequent streams are the fast stream to be originated. तो एमाने होचंती फास्ट स्ट्रीम टू बी ओरिजिनेटेड। डन एवरीवन है ना। केमिति हेता है, सपोज लेट्स से हिमालय, सो हिमालय इज लाइक दिस ना, ये रिवर origins from here, a river's origins and river will move here, obviously तुम जानछो एटा कोन syncline, this one is what anticline ना, बुझा पड़बो एटा काको syncline and anticline, this peak one is what anticline and the down one is the other valley, जाको में एंट कोन syncline कहूचे और valley कहूचे ना, बुझा पड़बोनी काको और valley। तो रिवर विल फ्लोज हियर, तेणु प्रथम थर पर जो रिवर ऑरिजिन हबो जे वैली को कैप्चर करूची बा वैली द्वारा मूव करूची, दैट वुड बी द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स और द फास्ट स्ट्रीम्स टू फ्लो इन ए वैली। आको भी कहा जाए मास्टर स्ट्रीम। आको आउ कौन कहा जाए मास्टर स्ट्रीम, अर्थात जेमती महानदी, महानदी हूँ गोटे तुम मास्टर स्ट्रीम, कारण ता सहित बाकी मैंने आसिक मिसुंट, तेणु सी है मास्टर स्ट्रीम, बाकी जो मैंने से मैंने सबसेक्वेंट। ध्यान से शुणा ताले ए है कौन कॉन्सेक्वेंट अर्थात मास्टर स्ट्रीम, आ सहित जो मैंने मिसिले दे आर द सबसेक्वेंट स्ट्रीम ना, बुझा पड़ोनी कहले माने सेकेंडरी ऑरिजिन हेइचंती, आगे महानदी ऑरिजिन हेइची देन ए माने ऑरिजिन होउचंती, दे आर फॉलोइंग टू द महानदी। डन एवरीवन। सो महानदी वुड बी ए consequent and master stream, the tributaries they are coming, they are joining, they are the subsequent stream ना, बुझा पड़बनी consequent हेइजबो जोटे मेन स्ट्रीम दा फास्ट बाहरिबो सेटा कॉन्सिक्वेंट और जो तापर सेकेंडरी जो ट्राइब्यूटरी बाहरिबो सेटा होची सब्सिक्वेंट हबो। तो हां, the tributaries which are feeding the water, tributary जहाँ रहला they would be subsequent, okay, and this would be consequent or master। Done।
now comes to the subsequent बुझिलो then आसबो obsequent तले subsequent or tributaries. Now comes to obsequent. Obsequent. Next is what? Obsequent. Now एटा तुमको last time OPSC पचारथिला prelim रे obsequent. शायद एटा पचारथिला obsequent. Of अर्थात opposite. Simple एटा रहबो तमरो opposite. कहले obsequent अर्थात गोटे रिवर opposite direction रे फ्लो करूची. तुम कहबो opposite अर्थात कोन ना आमे कहबा सी मेन रिवर जम देखिए सपोज महानदी दैट्स ए महानदी इठू ओरिजिन है कि एमती फ्लो करूची and this one to be a hill eta gote hilly region another river origins and moving opposite direction from this so this would be called as the obsequent है ना जोटा कि हमें opposite direction को ये मूव करूची let's say for example हिमालय एमती हिमालय अछि now those river origin from the southern side they will move to Gangetic plain those river origins northern side they will move to Tibet हाँ कि नहीं तले these rivers are the obsequent ना बुझा पड़े नेबे done everyone that means this obsequent also ये subsequent कारण सॉरी consequent also ये consequent कारण ये भी origin है प्रथम थर पई ये भी origin है प्रथम थर पई तो that is also a consequent stream बुझि परछनी खाली पास ऑपोजिट डायरेक्शन रे जाउचे बोली हमें ताकू कहूचे ऑब्सेक्वेंट अदरवाइज ये भी कॉन्सेक्वेंट ये भी कॉन्सेक्वेंट दैट मींस इट्स ए टाइप ऑफ कॉन्सेक्वेंट रिवर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन ना बुझा पड़िबनी ना यस सर तो ये yes sir yes sir सो दैट मींस ए रहला तमरो कॉन्सेक्वेंट सबसेक्वेंट ऑब्सेक्वेंट अब एथर क्वेश्चन पचारुची then are तमरो रेसिक्वेंट रेसिक्वेंट अर्थात रिसेंट री आर अर्थात व्हाट रिसेंट ओरिजिन ओ अर्थात अपोजिट बस एमती तमे मन रखो एस अर्थात सबसेक्वेंट सी अर्थात कॉन्सेक्वेंट ना रिसेंट ओरिजिन जोगुडा हेई थाए दे वुड बी कॉल्ड एज द व्हाट दैट मींस दे आर द रिसेंट ओरिजिन है ना रेसिक्वेंट of the master stream कहले master stream हैला परे एबे एबे से माने origin होची जेमति कि लेट्स से यमुना यमुना गोटे ट्रिब्यूटरी किंतु से पुरुना एबे जदी गोटे रिसेंट कोनसे रिवर तमे छोटियाटा आइडेंटिफाई करूछो दैट वुड बी रेसिक्वेंट है ना हे जुआबे तले ये थला हमरो जेते तमे देखिलो these are the what एमान को टोटल जदी मु मिसई देबी रेसिक्वेंट ऑब्सेक्वेंट सेक्वेंट सबसेक्वेंट सॉरी एंड कॉन्सेक्वेंट एमन को हमें टुगेदर कौन कहिबा दे वुड बी टुगेदर कॉल्ड एज सेक्वेंट रिवर सॉरी स्ट्रीम्स ध्यान से मन रखो सेक्वेंट्स अंडर आसुची के कॉन्सेक्वेंट सबसेक्वेंट ऑब्सेक्वेंट रेसिक्वेंट ताले तुमको सर सेक्वेंट रो मीनिंग कोन एटा क्वेश्चन पचार पर केही भी जने दैट मींस मु कहली सेक्वेंट ताउंडर आसेला तमरो कॉन्सेक्वेंट ऑब्सेक्वेंट रेसिक्वेंट एंड के आसुची आ गोटे दैट इज द subsequent so these all are sequent river तल तम को सर sequent अर्थात कोन sequent रो मीनिंग होची the rivers or the stream that follow the slope जे slope को follow करे let's say for example ये ला mountain peaks now this one is a peak and this one also another peak the river is flowing like this that means the river is following the slope को move से तरह slope जुआड़े जुआड़े पड़ीची that one is also moving in that direction the river let's say इटा तुम्हारा slope area
the river will origin here and it will move. तो ये एमाने slope को follow करंती. So those who follow the slope, simple slope को follow करंती तांके को आजे sequent streams. Done. Now comes to the insequent. हाँ. कहीं फॉलो करूनी. लेट्स से ये तार एमिति आसुची से ता स्लोप रे जाउची, ये आ स्लोप रे जाउची, करूनी केमिति. Now this one is obsequent, but this one is flowing according to the slope ना. Thank you, sir. हे परिबो ना. मस्ते फ्लो करिवे कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो. ना में देखिबा. So it was A, this would be B. ना में sequent रे देखिले consequent, obsequent, subsequent, resequent ये सब देखिले. Now comes to the insequent, अर्थात the river does not follow the slope. हैला सेथि पे आसला insequent. हमें sequent river देखिले insequent. ना insequent रो पुनी सेमति टाइप अछि like antecedent. रहला antecedent, superimposed, बस. So these are the two है ना. ये टू रहिबो ना. गोटे है antecedent. antecedent रो अर्थात कोन. सिंपल तमे कहइबो काहाकू antecedent river को जाए. जे तुमको कहा जाए इंडिया रे antecedent rivers किए. फॉर एग्जांपल तुमको सर केमिति क्वेश्चन आसीबो. तुमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज antecedent. 1 गंगा, 2 इंडस, 3 यमुना, 4 तीस्ता. Which of the following is antecedent? So it would be Indus. So Indus होची antecedent because these rivers they are following the slope. सेति पे माने sequent रे जीवो, insequent रे जीवो Indus. कहना इंडस स्लोप को फॉलो करू नहीं. तुमको सर केमिति. बिकॉज से टाइबेट रु ओरिजिन है कि माउंटेन एरिया क्रॉस करी इंडिया को एंट्री करूची. सेमति ब्रह्मपुत्र टाइबेट रु आसिकी हिमालय को काटिकी क्रॉस करिकी इंडिया को आसुची. सो दैट इज आल्सो एंटीसीडेंट. ना बुझा पड़िबोनी है ना. दैट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग द स्लोप. सो रिवर्स नॉट फॉलोइंग स्लोप, नॉट फॉलोइंग स्लोप. से माने स्लोप को फॉलो करंती नहीं. तुमको एमिति केमिति होची कि हाउ दे आर नॉट फॉलोइंग द स्लोप है ना. बुझि पछनी. गोटे डाउट. नर्मदा तापी हे परिबो कि नहीं नहीं हे परिबो. एथि पे हे परिबो नि. मु बुझाई दउची, बुझि जिवो. ओके सर रिवर जो फ्लो करिवो विदाउट स्लोप रो कोन फ्लो करि परियो. अब देखिबा. लेट्स से before the formation of Himalaya there were ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र हिमालय रो फॉर्मेशन पूर्वर अछि. एमते नै कि हिमालय हैला पर हिच. तो जेते बेले भाबो ना इट वाज फ्लोइंग ये तरह एमते डायरेक्शन रे जाउथिला. हिमालय जेते फॉर्मेशन हैला तो तार रास्ता सपोज एई पटे रिवर आसुथिला ब्रह्मपुत्र ना. माउंटेन तो गोटे दिन एमते नै कि तमे कांथ कर दैछो. से तो सपोज 1 इंच है ना बा 1 सेंटीमीटर बढ़ुची सपोज भाबो. ठीक अछि. तो ब्रह्मपुत्र मध्य 1 सेंटीमीटर टाकू काटिबो. सो दैट जेतले माउंटेन फॉर्मेशन होची से मध्य ता बाटो को मेंटेन करिकी रखिछि. तण करी बोथ साइड रे माउंटेन जेमति उठी जिवो किंतु मझरे गैप टा रहिबो. ए गैप टा किए बनैछि. रिवर नीचे काटी काटी बनैछि. से ता बाटो को मेंटेन करिकी रखिछि. So such kind of river is called as antecedent river. ना भी बुझा पड़िबोनी.
दैट मीन्स ये जो तुम हिमालय अच्छी ताठू ओल्डर कहले द रिवर मस्ट बी ओल्डर देन द लैंडफॉर्म. द लैंडफॉर्म हियर इज योर बट जदि आम कह हिमालय but this one is older than the Himalaya. So that is why that is maintaining its old path and coming across the India. ना बुझा पड़े बे this kind of river called as, so this river is not following the slope, otherwise सेपट को आसी पारी न थांता है ना. सर नर्मदा काहे होबनी से तो ईस्ट रु वेस्ट को जाउची जेतबेले कि स्लोप टा वेस्ट रु ईस्ट को अछि कारण सेटा रिफ्ट वैली रे जाउछि ना से थोड़ी निजे बनैछि सेटा. ओहो बुझी बुझि परछो नै ओके तो सेटा रिफ्ट वैली रे जाउछि से निजे बनैनता देन. तो नर्मदा जो ए रिफ्ट वैली रे जाउछि एटा ऑलरेडी गोटे डिप्रेस्ड एरिया ताकू से कैप्चर करके जाउछि से ए डिप्रेस्ड एरिया को से बनई. नर्मदा हैज नॉट फॉर्म दिस डिप्रेस्ड वैली और द रिफ्ट वैली. ठीक अछि नेबे तणु Clear. करके तमरो एंटीसीडेंट्स रिवर हम को कहबा सिंपल दोज रिवर्स एक्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द लैंडफॉर्म लाइक द इंडस. सिंपल गोटे टेक्निक मु कभी इंडिया रे कोनोसी रिवर जदी टाइबेट रु ओरिजिन आउ टाइबेट तो इंडिया पूर्व रु अछि और हिमालय पूर्व रु तणु कोनोसी रिवर जदी टाइबेट रो ओरिजिन है कि इंडिया को आसुची हम जानिबो इट्स ए एंटीसीडेंट रिवर. तल टाइबेट रु की ओरिजिन होची लाइक तमरो इंडस की होची ब्रह्मपुत्र दैट इज व्हाई दे आर एंटीसीडेंट. ना बुझा पड़बो नेबे डन. आ कोन कहछो एज एंटीसीडेंट्स मीनिंग सर माउंटेन जदि ब्लॉक कला रिवर को कोन सर कौन मु कहले? कहली माउंटेन्स जदि रिवर को ब्लॉक कला ब्लॉक बा करी पारुनी देखुछ से काटी काटी नीचे बाटो को बनै के रखी छी वैली करी की बुझी परछो नी. now comes to the superimposed ये थिला हमरो एंटीसीडेंट रिवर. तेणु ये क्वेश्चन तुम पचार ताले एंटीसीडेंट रिवर इज इनसेक्वेंट रिवर हाँ कि नहीं ए सेक्वेंट नुह. now comes to the superimposed. ना superimposed river काको कहा जाए तुमको इंडिया रे कोठी देखा जो superimposed river एठी छोटनागपुर प्लेटू. छोटनागपुर प्लेटू रे superimposed river अधिका देखा जाए तुमको कौन पई आर कंडीशन कौन कंडीशन हला जोठी बारंबार अपलिफ्टमेंट ही थाए बारंबार अपलिफ्टमेंट ही थाए अर्थात लैंड रो upliftment of what land. If any region the land is uplifted let's say once or twice तो सेठी superimposed river देखा जीवो ताले ता मीनिंग कोन भाबो रॉक रो डिफरेंट लेयर अछि दिस वन इज ओल्ड लेयर ता ऊपर गोटे नुआ लेयर फॉर्मेशन हेछि सपोज लेट्स से वोल्केनिक इरप्शन हेछि ता ऊपर गोटे नुआ लेयर फॉर्मेशन करिछि है ना. तो एमती डिफरेंट हम कहबा सॉर्ट ऑफ लेयर्स देखा जबो बट द रिवर फ्लोइंग हियर दैट हैज कट डाउन और इरोडेड दिस न्यू रॉक ए न्यू रॉक को ना इरोड करके खत्म कर देछि. now this one is flowing over the old rock now it's flowing over old rock. तो एई भले रिवर को कहा जे सुपर इम्पोज्ड अर्थात रिवर साइड को देखले हमको लागुछि द रिवर is has eroded or undercut the young rock and flowing over the old. बुझि परछ तेनो दीटा रॉक भितरे हमको कोन अछि यूनिफॉर्मिटी नाही. so this kind of river is called as superimposed like the river is imposed है ना. तो ये थिला तमरो इनसेक्वेंट स्ट्रीम्स. ओके तो जदि तुमको कहा जे सुपरइम्पोज्ड कोठी देखा जिवो ए रीजन रे हिमालय रे मध्य देखा जिवो बिकॉज़ हिमालय मध्य बहुत थोर अपलिफ्टमेंट हेछि एठी मध्य किछि किछि रिवर तुमको देखा जिवो. देन तो ये थिला एबे हम देखबा पैटर्न
आम देखा ए पैटर्न अनुसार ठीक अच्छे। तो ये थिला तुम ओरिजिन विषय जहाँ था मुझे कहीदेली ना पैटर्न रे देखा तो तुम पैटर्न तो समस्ते पढ़ीच कि कम बेसी है ना लाइक द ट्रेलिज वन TRELISED ट्रेलिज्ड पैटर्न। अच्छा ये सब तो ना शुणी थो तुम मैंने ना शुणी ना एबे सुनो सर बढ़िया ताले देन डेंड्रिक पैटर्न है ना डेंड्रिटिक सॉरी TIC है ना डेंड्रिटिक पैटर्न देन सर्कुलर पैटर्न भी देखा जीवो रेक्टेंगुलर भी देखा जीवो देन तुमको रेडियल देन तुमको सेंट्रीपेटल है ना एमती तुमको डिफरेंट टाइप रो रिवर्स देखा जीवो डन। चल एबे गोटे गोटे आम देखा ड्र कर दिए मुझे इमेज प्रथम है ट्रेलिज पैटर्न कौन मेन रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस ओके नाउ this one is mountain this side is mountain है ना so this one is now the tributaries are coming meeting the tributaries are coming meeting the tributaries are coming meeting ध्यान से देखो एटा है तुम मेन रिवर फ्लो करुची मेन रिवर फ्लो करुची the tributaries are coming and meeting है ना एमाने को एंगल रे 90 डिग्री एंगल रे मीट करूछंती दे आर मीटिंग एट 90 डिग्री एंगल है ना कोठो ओरिजिन हबे ऑब्वियसली माउंटेन रो ओरिजिन हबे एंड दे विल फॉलो द स्लोप सो दिस काइंड ऑफ जदि हम कहिबा ताली एटा हला हमर कोन वैली एरिया दिस वन इज वैली एरिया तो रिवर्स आर कमिंग टू एंड कोन सिंक्लाइन फ्रॉम एंटीक्लाइन एंड मीटिंग विथ द मेन स्ट्रीप एट राइट एंगल तो एमती तुमको एपट साइड रे भी आउ गोटे देखा जीवो डिप्रेस एपटे भी थिबो तो दिस टाइप्स कॉल्ड एज द ट्रेलिस आकु कहा जाय ट्रेलिस ताले एठी मते को ट्रेलिस पैटर्न रे मास्टर्स बा आमे कहबा सबसिक्वेंट स्ट्रीम काहकु कहबा ट्रिब्यूटरीज और सब्सिक्वेंट है and this would be consequent है ना ताले these rivers are together sequent or insequent sequent Sequence, sir. these are sequent now next comes to dendritic pattern or tree shape or आपको हमें कहू tree shape अर्थात let's say the main river तापर पुणी ब्रांचेस एमिति पुणी आउ गोटे ब्रांचेस then branches here branches तो एमती नंबर ऑफ अर्थात जदि मु देखिबी मु ड्रॉ करी एमती तो हुएनी तो कौन होते मेन रिवर इज कमिंग ना द ट्रिब्यूटरीज आर मीटिंग लाइक दिस तो एमती शेप रो को देखा जीवो दैट्स ए महानदी जाइकी बे ऑफ बेंगल रे एठी पडुची ना दिस वुड बी माउथ किंतु तार ऊपर मुंड को जीवो जदि अपर पार्ट रे महानदी रो बहुत सारा ट्रिब्यूटरी एमती आसे कि मीट करूची किंतु लोअर पार्ट रे नाही लोअर पार्ट रे ट्रिब्यूटरी नहीं से माने डिस्ट्रीब्यूटरीज थांती दैट्स ए गोटे ट्रिब्यूटरी आर पुनी थिबो ट्रिब्यूटरी गोटे ट्रिब्यूटरी रो आउ गोटे भी ट्रिब्यूटरी थिबो ना सो दैट इज व्हाई दे लुकिंग लाइक ट्री शेप ना बुझा पड़िबनी है ना सो दे लुकिंग लाइक ट्री शेप तेणु करी एमान को कहा जाए डेंड्रिटिक पैटर्न
जेमती तुम महानदी गंगा मैक्सिमम इंडिया रे होची डेंड्रिटिक पैटर्न है ना डन एवरीवन देन सर्कुलर अर्थात सपोज ये गोटे डोम एरिया अच्छी एटा हला तुमरो डोम ना रिवर कौन कर एमती ऑरिजिन हम तमती बुली बुली तलकू जीव बुली बुली तलकू जीव तो यही भलिया को कह जाए सर्कुलर और एनुलर बुली 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 तलकू जीव बट तापई कंडीशन है डोम शेप हेइतबा दरकार एबे बुझा पड़िबो now let's be rectangular now rectangular is a form of trellis a trellis रो form ताले हमें rectangular कहीं कहिबा ताले देखि दिए एठी that said the river is moving like this ना tributary कोन करूची एमिति आसुची then एमिति meet करूची ना देखो so tributaries are coming parallel then meeting here coming parallel meeting here so this type of river they are called as what that is why they are called as so these are the tributaries म्यूट कर दियो कि अनम्यूट करिचो म्यूट कर दियो म्यूट करो जी अनम्यूट करिचो है ना so here would be 90-degree angle so this would be 90-degree angle तो रिवर ना देखो ध्यान से देखो मु तुम कहतली ट्रेलिस पैटर्न रे मध्य इन द ट्रेलिस पैटर्न rivers were also meeting 90-degree angle but एठी भी 90-degree but difference होची here your subsequent river that will move parallel then bend करके आसिकी join करिवो so that आपको हम कहबा rectangular हैला ठीक अछि Yes, sir. ना तुम कहबा आपन कंडीशन कोन आपन दरकार माने जॉइंट्स दरकार रॉक रे माने जेमती जॉइंट्स देबो ना रिवर से जॉइंट से फ्लो करिवो तो आप से ओल्ड रॉक सिस्टम दरकार ध्यान से मन रखो रेक्टेंगुलर रिवर पैटर्न पे ओल्ड रॉक सिस्टम दरकार ना कम्स टू द रेडियल पैटर्न रेडियल अर्थात तो जानी से समझते रेडियल अर्थात रिवर गोटे जगार चारिआड़ को सपोज ये गोटे एरिया ना फ्रॉम हियर गोटे रिवर आड़ को जाउची गोटे आड़ को जाउची गोटे आड़ को जाउची गोटे आड़ तो ये हला रेडियल पैटर्न कहले सेंटर रु ओरिजिन होची चारि आड़ को मूव करूची तो एमान को कहा जाय रेडियल पैटर्न ठीक अछि तो ये कोठी देखा जिवो तुमको कोठी देखा जिवो इंडिया रे कोठी देखा जिवो ताले ये एनीवन छोटनागपुर प्लेटू ना कारण तमे देखो छोटनागपुर प्लेटू रु आसला तमरो साउथ कोएल है ना शंख सहित मिसिकी किए फॉर्मेशन गला साउथ कोएल जो तुम आसो ये क्या सहित मिसिबो शंख सहित तो साउथ कोएल और शंख मिसिकी हैला कोन बैतरणी ना ब्राह्मणी कोन एई सारे रिवर सिस्टम टा गुटी ताली भल हेला से तुमरो? माने आउ थरे पढ़े देबे ତ ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ना ना आउ थरे करी होनी पुनी आउ थरे कोन एटा को रेकॉर्डिंग देखिथबो आउ थरे ही परिबनी है ना तो एटा हैला तुमरो सर्कुलर रो ब्राह्मणी एग्जांपल टिके कहबे ओके सर सर्कुलर रिवर हाँ सेट कहूची मी तो लेट्स से ब्राह्मणी हैला एपटे दामोदर गला दिस साइड दामोदर ना दिस साइड नॉर्थ कियोल एपटे तुमर आसीबो नॉर्थ कियोल वेस्ट को जीवो नर्मदा नर्मदा मध्य तुमको अमरकंटक रु ओरिजिन हेछि तो अमरकंटक एक्सटेंशन पार्ट ऑफ छोटनागपुर प्लेटू तो ये नंबर ऑफ रिवर एपटे आसुची तुमर पुनी कोन सुवर्णरेखा तो सुवर्णरेखा भी छोटनागपुर प्लेटू तो दैट मीन्स गोटे जगार रिवर ओरिजिन है कि चारिआड़ को बिछाड़ी जाउची जाको हम कहिचे सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न और रेडियल पैटर्न आपको तमे रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल डन ये तुमको देखा जीवो छोटा नागपुर प्लेटू रे देन आसबो रेडियल गला सेंट्रीपेटल तार अपोजिट आ कोन एटाला चारिआड़ को बिछाड़ी की जाउथला
और चारियाडू गोटे जगह को आसीबो भाव दैट वुड बी सेंट्रीपिटल फॉर एग्जांपल चिलिका चिलिका को बहुत गुड़ा रिवर आसिक मिसुची तो एटा सेंट्रीपिटल ना बुझा पड़िबनी चारियाडू Yes, sir. गोटे Yes, जगह sir. को आसुची ना Yes, sir. ताले सेंट्रीपेटाल होची सेंट्रीफ्यूगल रो ऑपोजिट बुझी परछन बा तमे जोटा जाको नहीं परिबो तो ये थिला तमरो रिवर पैटर्न हां कोन कोथला एबे को हाउ जण कोन कोथला ना सर सर्कुलर को एग्जांपल टिके देबे सर्कुलर एग्जांपल तो इंडिया रे साहित्य मिलिबा बहुत डिफिकल्ट इंडिया रे मिलिबा बहुत डिफिकल्ट सर्कुलर हाँ आउ किछि रिवर पैटर्न अछि टिके डिफिकल्ट ना लागिवो तुमको फॉर एग्जांपल तुमको जदि पचारे कि जो नर्मदा रिवर अच्छी आमर को टाइप रो पैटर्न है ना मु कहूँ पैटर्न कथा नर्मदा जो अच्छी तुमर ये को टाइप रो पैटर्न करुच्ची आपको कह जाए पिनेट पैटर्न डांस मन रखो शायद बहुत रेयर स्टूडेंट जानी रेयर इवन यूपीएससी पिला भी रेयर जानी बुझिपार पिनेट पैटर्न कह यूपीएससी पिला किए पचार देख कहीपर 100% पिनेट पैटर्न आपको कह जाए पिनेट पैटर्न तुमको पिनेट पैटर्न कौन तो पिनेट पैटर्न है या कि सपोज ये गोटे माउंटेन दिस साइड इज अनदर माउंटेन बट दिस वैली ये जो तुम्हारा वैली दिस वुड बी नैरो दिस शुड बी नैरो वैली नाउ हियर इज नर्मदा इज फ्लोइंग आपको देखो कहीं पिनेट को जाए the Narmada river is flowing but tributaries are coming meeting in clungy ये माने सब आसुचंती बोथ साइड टू किंतु बहुत सारा ट्रिब्यूटरी तांका भितर डिस्टेंस बहुत कम क्लंजी ध्यान मन को जो ट्रिब्यूटरीज रही तांकर डिस्टेंस लेस तांका भितर गैप लेस तो एई भले पैटर्न को कह जाए पिनेट पैटर्न डन एवरीवन बाकी Yes. तम पई मोर देन एनफ दिस मच है ना पैटर्न तुमको कहीदेली तो सेंट्रीपेटल कहीदेली रेडियल कहली रेक्टेंगुलर सर्कुलर डेंड्रिटिक एंड पिनेट पैटर्न तो ये गला तमरो सर ये जो सेंट्रीफ्यूगल जोटा कहले हां सेटा टिके खाली से रिवरटा ना दिए रिवर ना हला सपोज ये हला छोटनागपुर प्लेटू गोटे हला तमरो नर्मदा गोटे हला साउथ कियोल गोटे हला तमरो सुबर्णरेखा गोटे हला नर्मदा सॉरी कौन दामोदर देन रहला तमरो नॉर्थ कियोल देन आ गोटे अछि एठी गोटे रिवर अछि सोन रिवर सो देखो ये माने गोटे जगह रो ओरिजिन हो कि डिफरेंट डायरेक्शन रे जाउची तण करके रेडियल साउथ कियोल नॉर्थ कियोल सोन नर्मदा दामोदर सुबर्णरेखा यस सर तो ये थला रिवर पैटर्न एंड तमरो जेते लैंडफॉर्म भी कंप्लीट हेगला आउ हमरो मध्ये कोन कंप्लीट हेगला